Good morning, students. So we have completed the syllabus of reader of PT2. Now we need to start chapter tenses of grammar for PT2 syllabus. So tenses are coming in this syllabus. So let's start tenses. First, just mark this that we are starting tenses, and this is a very important chapter. You know it. This is a very important chapter, and many of the further chapters are completely dependent on this chapter. If you will learn tenses properly, you will be able to do that chapter, and that will be easier for you. So please pay your complete attention to this chapter. Definition of tenses. Tenses are verb form which indicate the time of an action. Means tenses हमें क्या बताता है? Tenses एक फॉर्म है वर्ब की जो हमें ये बताता है कि कौन सा काम कब हुआ है. There are three types of tenses. First is present tense, past tense and future tense. What is present tense? Present tense means आज के बारे में, the action which is going on in present time, जो आज हुआ है. Past tense, the action which was done in past. The action which was done in future, which will be done in future, that will be in future tense. Present tense आज का काम. हम हिंदी में प्रेजेंट टेंस को क्या बोलते हैं? वर्तमान काल, मतलब आज जो हम काम कर रहे हैं वो. पास्ट टेंस जो काम हो चुका, भूतकाल. एंड फ्यूचर टेंस भविष्य काल, जो भविष्य में, फ्यूचर में होने वाला है. सो फर्स्ट स्टार्टिंग विथ प्रेजेंट टेंस. प्रेजेंट टेंस हैज 4 पार्ट्स. present indefinite, present continuous, present perfect, present perfect continuous. Students, remember this. Every tense has 4 parts. Present tense, first we are reading present tense, so we are doing present tense. Present indefinite, present continuous, present perfect continuous. Just remember this. First, starting with present indefinite. Now we'll read the uses of present indefinite, where we need to use present indefinite tense. Universal truth. यूनिवर्सल ट्रुथ मतलब एक ऐसा सच जो कभी बदल नहीं सकता. फॉर एग्जाम्पल, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन. जो धरती है वो सन के अराउंड घूमती है. दिस इज अ ट्रुथ. दिस कैन नेवर चेंज. सो इन दिस सेंटेंस वी हैव यूज्ड present indefinite. How? Revolve is a verb and we have used s with verb. Okay. Second is repeated and habitual action. Means the action which is a habit of a person. एक action जो एक habit बन चुका है किसी का. So that will come under present indefinite rule. जब भी ऐसा कुछ हो, we need to follow present indefinite form. राम प्लेज क्रिकेट एवरी डे. राम रोज क्रिकेट खेलता है. हेयर प्ले इज अ वर्ब. विद प्ले वी हैव यूज्ड एस. फ्यूचर प्लान्ड एक्शन. एन एक्शन विच इज प्लान्ड एंड विच इज फ्यूचर बेस्ड. स्कूल रीओपन्स ऑन मंडे नेक्स्ट. अगले मंडे को स्कूल रीओपन होंगे. इन दिस वी हैव यूज्ड रीओपन प्लस एस. So now how the structures will be formed of this? Sentence structure. Here we'll read affirmative, negative and interrogative. Okay. Affirmative, first we'll see he, she, it, that is a subject and singular verb. Subject में क्या क्या आएगा? He, she, it और singular, plus we will follow it by verb first form ses plus object. For example, Sheena. Sheena is singular, subject. Go plus es. Go is a verb and we have used es. To school daily. This is object. Sheena goes to school daily. Sheena रोज स्कूल जाती है. Second, I, you, we. Subject, they plural. Now these all are plural. With these we use verbs first form only with object. Example, they, subject, go to school daily. वो रोज स्कूल जाते हैं. Negative, subject plus do does plus not plus verb plus object. In negative, what we use? Subject, do and does.
subject do and does plus not plus verbs first form plus object. शीना is a singular subject, singular के साथ हम does use करते हैं, does not go to school daily. They is a plural subject, with plural we use do, not go to school daily. Okay, here we'll take interrogative. Interrogative में हम क्या करते हैं, जो verbs होती हैं helping verb उनको हम पहले ले आते हैं. So first do or does helping verb, then subject, then verb first form plus object plus question mark. This will show that the sentence is interrogative. Example, does, because the subject is singular, Sheena is singular. Does Sheena go, verbs first form, to school daily, object. Do, because they is plural, do they go to school daily, question mark. So hope you have understood present indefinite tense. Please, if you have not watched this video, watch till here twice, thrice, because you need to learn this properly. You need to learn the structures very properly to make your own sentences. Moving to present continuous tense. What is the use of present continuous tense? Where we use present continuous tense? For an action happening at the time of an action. एक ऐसे एक्शन के लिए यूज होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस जब जो काम है वो कंटिन्यू चल रहा हो. लाइक द टीचर इज टीचिंग इन द क्लास. द टीचर इज स्टिल टीचिंग इन द क्लास, मतलब जो टीचर हैं वो जो पढ़ा रही हैं वो अभी तक कंटिन्यू चल रहा है. यू कैन गेस दिस फ्रॉम द नेम ऑफ दिस टेंस, कॉन्टिन्यूस, मतलब जो अभी भी कंटिन्यू चल रहा है. The sentence structure will be followed. Affirmative, affirmative, he, she, it, singular, singular plus is. Okay. He, she, it, singular plus is plus verb first form plus ing plus object. He is singular, is playing chess. वो chess खेल रहा है. I with am verb first form ing object. I am playing chess. मैं chess खेल रहा हूँ. You, we, they plural. You, we, they और plural के साथ हमें are यूज करना है with verb first form ing object. They are playing chess. वो chess खेल रहे हैं. He के साथ हमने क्या यूज किया, is. I के साथ हमने क्या यूज किया, am. एंड दे के साथ हमने क्या यूज़ किया, आर. सो यू नीड टू टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स ऑल्सो कि सिंगुलर के साथ क्या यूज़ होगा, प्लूरल के साथ क्या यूज़ होगा. इन नेगेटिव, नेगेटिव सब्जेक्ट इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट. Here we'll use not with the helping verbs. He is not playing chess. I am not playing chess. They are not playing chess. These will be negative sentences. Now we'll read interrogative. Interrogative, as I said before, जो verbs हैं वो पहले आ जाएंगे. helping verbs is am are will come first, then subject, then verb first form ing plus object and question mark. Here is he playing chess. is क्यों आया, because he is singular और he के साथ क्या आता है, is. Am I playing chess? क्या मैं चेस खेल रहा हूँ. Are they playing chess? क्या वो सब चेस खेल रहे हैं. Hope you have understood this. Moving to present perfect tense. Here the uses of present perfect tense is for an action that just has been completed. एक ऐसा काम जो अभी अभी खत्म हुआ है. Like my work has done, कि मेरा काम खत्म हो चुका है. Like for example, if we are in a class and teacher has given you something to complete. अब आप जैसे ही complete कर देते हैं तो what you say, मैम I have completed. You generally you say it only कि मैम I have completed. तो I के साथ आप have लगा रहे हैं. have is present perfect. इसका मतलब जो काम आपने किया है वो अभी अभी ख़त्म किया है और उसको बताने के लिए आप अपने टीचर को बोल रहे हैं मैम I have completed. Okay, now moving to sentence structure. Affirmative, he, she, it singular. Singulars के साथ has use होता है and perfect tense में verb की third form plus object. He has completed his project. He के साथ has and complete की third form completed. He has completed his project.
आई यू वी दे प्लूरल, प्लूरल के साथ हैव यूज होता है एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. दे हैव कंप्लीटेड देयर प्रोजेक्ट, उन्होंने अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया है. सब्जेक्ट, नाउ वील मूव टू नेगेटिव टेंस, नेगेटिव पार्ट. सब्जेक्ट हैज हैव नॉट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. हैज किसके साथ यूज होता है? सिंगुलर. हैव किसके साथ यूज होता है? प्लूरल. सिंगुलर तो ही के साथ वी आर यूजिंग हैज नॉट कंप्लीटेड हिज प्रोजेक्ट. दे के साथ दे प्लूरल है सो वी आर यूजिंग हैव. दे हैव नॉट कंप्लीटेड देयर प्रोजेक्ट्स. इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव हेल्पिंग वर्ब्स पहले आ जाएंगी. हैज हैव विद सब्जेक्ट वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. हैज ही कंप्लीटेड हिज प्रोजेक्ट? हैव दे कंप्लीटेड देयर प्रोजेक्ट? होप यू हैव अंडरस्टूड. नाउ moving to next, present perfect continuous. Here present perfect continuous का use क्या होता है? To express an action which began at some time in past and still continuing. Here we'll talk about an action which was started in past but we are still continuing in present. एक ऐसा काम जो past में शुरू हुआ था पर present में अभी तक चल रहा है. आई हैव बीन राइटिंग फॉर 3 hours, मतलब एक काम जो 3 घंटे पहले शुरू हुआ था पर अभी तक चल रहा है. इन दिस वी जनरली डिस्क्राइब टाइम, इसमें हम सिर्फ टाइम बताते हैं कि ये काम कब से हो रहा है. ओके, इफ समवन इज आस्किंग कि बाय व्हेन यू आर डूइंग दिस वर्क, तो आप बताएंगे कि भाई आई हैव बीन डूइंग दिस वर्क सिंस और फॉर. ओके, हेयर सिंस एंड फॉर आर द मेजर पार्ट्स ऑफ दिस tense. Sentence structure, moving to sentence structure. Affirmative, he she it singular, has been verb first form plus ing plus object plus since for. Okay, the patient has been waiting for the doctor for 2 hours. Here the patient has been waiting, the patient is singular so we have put he has, and the sentence structure says has के साथ been verb की first form ing plus object. As you know continuous tense है so we'll use verb first form and ing. एंड फॉर 2 hours की जो पेशेंट है वो डॉक्टर का 2 घंटे से वेट कर रहा है. इफ नेक्स्ट आई यू वी दे प्लूरल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर. हेयर प्लूरल के साथ हैव बीन वर्ब फर्स्ट फॉर्म ing ऑब्जेक्ट एंड सिंस फॉर. सम पेशेंट्स हैव बीन waiting for doctor since 10 o'clock. Now here you can see the difference between since and for. When the time is not confirmed, 2 घंटे, कौन से 2 घंटे? मॉर्निंग, इवनिंग और नाइट और नून. सो दैट्स वाई वी हैव पुट फॉर. इसका मतलब जो फॉर है वो पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज होता है. वेयर वी यूज फॉर, फॉर इज यूज फॉर पीरियड ऑफ टाइम, कि कोई सा भी एक पीरियड हो टाइम का उसके लिए, कि लाइक 2 hours, 3 hours, 2 days, 4 days. पर कौन से 2 घंटे, दैट इज नॉट क्लियर, द पीरियड इज नॉट क्लियर. एंड सिंस इज यूज्ड फॉर पॉइंट ऑफ टाइम, जहाँ हमें एग्जैक्ट टाइम बताया गया हो तब हम सिंस यूज करते हैं. 10 o'clock कि जो पेशेंट्स हैं वो 10 o'clock से वेट कर रहे हैं. नेगेटिव, मूविंग टू नेगेटिव. नेगेटिव में हम क्या यूज करेंगे? नॉट लगा लेंगे बीच में हैज हैव के बाद. द पेशेंट हैज नॉट बीन वेटिंग, सम पेशेंट्स हैव नॉट बीन वेटिंग. मूविंग टू इंटेरोगेटिव, हम क्या करेंगे? वी विल पुट हेल्पिंग वर्ब्स बिफोर. हैज हैव सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म ing ऑब्जेक्ट सिंस एंड फॉर. हैज द पेशेंट, सब्जेक्ट क्या है? द पेशेंट, तो हमने द पेशेंट से पहले हैज लगा दिया. हेयर सब्जेक्ट इज सम पेशेंट्स, तो हमने सम पेशेंट्स से पहले हैव लगा दिया. सो वी हैव कंप्लीटेड प्रेजेंट टेंस. होप यू हैव लर्नड, you have understood this present tense. If you have not, I am revising it with you. Kindly revise it with me. Present tense has 4 parts. First, present indefinite. Here present indefinite is used for universal truth, repeated and habitual action, and future planned action. The structure of present indefinite is he she it singular verb first form ses. हम सिंगुलर के साथ s और es लगाएंगे एंड प्लूरल के साथ we will put only verbs first form. नेगेटिव we will put do और does, and do किसके लिए? सिंगुलर, सॉरी
डू किसके लिए प्लूरल, डस किसके लिए सिंगुलर, शीना डज नॉट, दे डू नॉट. Interrogative, do and does, because in interrogative we put helping verbs before subject. Here subject is Sheena, so we have put helping verb does before. Here subject is they, so we have put do before they. Moving to present continuous. The use of present continuous is to show an action which is happening at the time of an action. मतलब एक ऐसा काम जो चल रहा है, कंटिन्यू हो रहा है. द टीचर इज टीचिंग इन द क्लास. टीचर अभी भी क्लास में पढ़ा रहे हैं. द सेंटेंस स्ट्रक्चर सिंगुलर के साथ वर्ब इज, सिंगुलर के साथ इज, प्लूरल के साथ आर एंड आई के साथ एम. सिंगुलर के साथ इज, आई के साथ एम, प्लूरल के साथ आर, एंड दिस इज कॉन्टिन्यूअस टेंस, सो वी विल पुट आई एन जी. दैट इज कंपल्सरी विथ कॉन्टिन्यूअस टेंस. मूविंग टू नेगेटिव. नेगेटिव में हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब्स के बाद नॉट लगा देंगे. ही इज नॉट, आई एम नॉट, दे आर नॉट. इंटेरोगेटिव वील पुट हेल्पिंग वर्ब बिफोर सब्जेक्ट. हेयर सब्जेक्ट इज ही, सो इज ही, एम आई, आर, दे. Okay, moving to present tense. When we use present tense for an action that just has been completed, एक ऐसा काम जो अभी अभी खत्म हुआ है. And the structures for this is singular के साथ has, and in perfect tense we use verb third form. In perfect tense we use third form. With singular we'll use has, with plural we'll use have. In negative we'll use have, has, have, not. Interrogative has, have, subject. Moving to present perfect continuous. In present perfect continuous, to express an action which began at some time in past and still continuing. I have been writing for 3 hours. मैं 3 घंटे से लिख रही हूँ. Affirmative singular has, plural have, and for is used for period of time, and since is used for point of time. Please remember this. For is used for period of time, since is used for point of time. If you will not remember by this video, kindly write it somewhere in your copy. And yes, I'll give you the notes of this. You have to write down in copy also to learn it better.